Everybody is having two connections. Why are they like this? Harsh, Kirti, Varun. Alright. Because in my laptop mic won't connect properly. Okay, that is Varun. I just connected to my laptop. Okay, Kirti. Everybody has something. Kirti, Yes, what the about you? same actually. Same. Okay. Okay, no problem. So again, I have logged in as user one. जैसे I am user. और जैसा कल मैंने बताया था कि no permissions, so this fellow cannot access any of the service now. Right? If I go to the S3, clearly says no permissions. Similarly, if I try using EC2, right? No permission means no permission. I cannot show you in the summary, forget about creating anything, instance, etc. And if I go to what else? You can see. So now, as and when you are going to assign the permission, right? Thing is, permissions are effective immediately, right? Let us say assign the permission, right? This is my user. Go to the permissions properties here, right? And add permissions. Same way, you are presented with the same options. And I'm going to use policies directly, attach policies directly. The third option है ये अपन use करेंगे. And now, मान लीजिए मुझे इस user को permission देना है related to EC2 management. Right here, I make a search EC2 and EC2 full access. Right, suppose full access means all the aspects of EC2 management are going to be there available, allowed. And I select, go for next, and add permission. Yes, permission is added, right? And the moment I add it, it is effective as well, right? अब अगर मैं यहाँ पर verify करता हूँ, really this fellow can manage the instances. So I go to EC2 dashboard once again. Architecture, right? This is normal presentation, right? ये मतलब डिस्प्ले सब आ रहा है, ये सब नहीं बता रहा है आपको, मतलब permissions are there and that all access levels are allowed. That's why no others are there. इंस्टेंस में हम जाएंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और जैसा स्टेटस है अकाउंट में वैसे वो दिखाई दे रहा है. But it is only with EC2. Next other services are still going to be the same status. If I try accessing S3, so here I go to the buckets and still it remains the same, right? And this access is not only for console, even for let's suppose this user makes an CLI based access, programmatic access जिसे हम बोलते हैं, तो वही स्टेटस रहेगा, राइट? तो अभी मैंने कंसोल एक्सेस इनेबल किया हुआ है, तो दिस यूजर इज गोइंग टू log in providing name and password, right? That is console access. But I suppose this user needs to access CLI based, right? So you have to enable or other you have to set up these keys. Two keys are there. One is the access key and other one is secret access key, right? So if I configure these access keys, then programmatic access is going to be allowed. Okay, and let us see how it all works. So हमें जाना पड़ेगा सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में, और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में ये ऑप्शन है आपके पास एक्सेस कीज, राइट? क्रिएट एक्सेस की और यूज केस हमारा रहेगा CLI. Okay, confirm, next, and what is this? Tag is optional. Create access key, and this is created. हम देखेंगे एक्सेस की जनरेट हो गए और सीक्रेट एक्सेस की, राइट? अब यहाँ एक बात समझने की है कि जो कीज आपको दिखाई दे रही है, स्पेशली सीक्रेट एक्सेस की, दिस इज बीइंग डिस्प्लेड टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द लास्ट टाइम, राइट? फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम. Meaning what? That if suppose I close this page,
So this secret access key, if you do not save it, अगर आपने save नहीं किया, so it's going to be lost forever. Meaning there is no way to recover it. If because of any reason, secret, I'm not talking about access key. Access key, you can manage to see. But secret access key is something which is only visible, available to you right now. And if you don't save it and you close this page, so it's lost. Or even after saving it, suppose you lose the key, there is no way to recover it. Note भी यहाँ पे बता रहा है. You will lose or forget your secret access key. You cannot retrieve it. Right? That's the importance. So instead, create a new access key and make the old key inactive. यही एक रास्ता है कि अगर आपके पास secret access key अगर lose हो गया है, right? If you forget or if you lose, so create this key pair again. एक नया की पेयर जो है जैसे हमें recreate करना पड़ेगा, मतलब वो रूट यूजर ही करेगा और पुराना जो की है उसको आप inactive कर दो. Right? This is the only way, but you cannot retrieve it. So before we close down this page, you have to ensure that key should be saved, right? So मैं इसको save कर लेता हूँ notepad के अंदर फिलहाल, right? Otherwise you can download it as a CSV file also. So here I copy, this is my access key, and this one is secret access key, right? And close it now. So now access key is visible. Remember, right now I'm working as a root user. So access key आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन secret access key जो है वो आपको दिखाई नहीं देगी. Right? And now with this credential, as such, programmatic access is enabled. Right? तो अभी जो मैंने access किया हुआ है वो क्या है? वो है console access. Right? लेकिन अगर CLI based access करना है तो you have to do it via command prompt. लेकिन command prompt में भी तब काम करेगा, कमांड तब काम करेंगे when you have installed CLI tools, AWS CLI tools, वो आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, राइट? और वेरीफाई अगर करना है कि वो इंस्टॉल्ड है या नहीं, सो इन योर कमांड प्रॉम्प्ट टाइप दिस कमांड AWS. Right? AWS. If you get the help output like this, it means CLI tools are installed, right? तो पहली बार जब आप इनको इंस्टॉल करोगे तो you have to just make a search for AWS CLI tools. Right? And here actually go for I think the very first option, command line interface. ये है डाउनलोडर. यहाँ पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मैक ओएस है आपका तो ये यहाँ पर क्लिक करो, लिनक्स मशीन है तो यहाँ पर, because we all people are using right now Windows, so use this option, right? Download the package, install it, right? छोटा सा पैकेज है ये, hardly takes few seconds. Install it and verify that it is installed, right? By going over here in the command prompt, type AWS, right? ये output आना चाहिए. Okay. And now how we are going to log in? So for that command is AWS configure. Press enter. And I'll prompt you for the access key and secret access key. So this is the access key and secret access key for user one, not for everybody. It's only for user one, right? So user one अगर login करता है as programmatic access, so उसे access key यहाँ पे देना है और secret access key भी specify करना है. Press enter. Then in which region you want to log in. By default it shows you US East 1, meaning North Virginia. If you want to specify something different, so you can change it, right? क्या लिखना है तो आप यहाँ से भी आप देख सकते हो, right? किस रीजन के लिए, जैसे अगर मुझे जाना है मुंबई रीजन में तो मैं लिखूंगा AP South 1, right? अभी वो बता रहा है US East 1, right? So US East 1. So it is going to be there in North Virginia. Press enter. Output format is none. Enter. Right? Login is there. Successful.
And now, if this user wants to operate on any resource, of course, commands पता होने चाहिए, right? And of course, permissions भी होनी चाहिए, right? So right now this user is having permission only for S3. Oh, sorry, EC2, right? Not for S3. क्या क्या करना है? हाँ, S3 की permission नहीं, right? User 1, this is console access. S3 की permission नहीं, S3 is the storage service. So अब यही चीज अगर मैं यहाँ से भी करता हूँ, suppose I try to list the contents of S3. So command is AWS S3 list, right? Press enter, and it says access denied, right? So कहने मतलब क्या है, मैं बताना ही चाहता हूँ that whether it is programmatic access or it is console access, right? Your output remains the same, right? If suppose you are awarded with permission, yes. Let us see. अगर मैं इसको permission देता हूँ S3 related, so see how the difference is going to be there. So we'll assign the permission to this user. अभी हम user 1 की properties में काम कर रहे हैं. Go to the permission, add permission, right? Attach policies, and here I'm going to make it search for S3. Right? Just hold on. Yes. So here I give this user the permission for S3, make a sub for S3, और हम दे देते हैं इसको S3 full access, ये वाला, right? Proceed, next, add permission. So now this user as such has got two set of permissions, EC2 full access and S3 full access, right? Verify करके देखते हैं. So once again, here actually, if I refresh this page, right, for S3, ये user 1 है यहाँ पर, right? Refresh. बदल गए output, and you can see all the contents here, and not only here, the console access है. Even suppose this user working as a on the CLI, issue the same command once again to list the contents of S3. Same output, आप देखो output भी same है, right? ये वही नाम है जो यहाँ पर है, right? Yes. So if permissions are removed, immediately it is going to be a factor, right? If I remove it, right? Remove करने के लिए process simple, interface बहुत simple है इसका. Select and remove. Remove the policy. Removing the policy means permission is revoked, right? And verify. If I refresh it, again, same kind of color. Same way here on the CLI front. Once again, if I try to list as user 1, so access denied. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये CLI बेस है, तो CLI मैनेज करने के लिए कमांड लाइन टूल्स इंस्टॉल होना चाहिए. ठीक है, तो ये आप कर सकते हो. Yes. All right. So coming to the next part. चलिए. अभी देखिए जो मैं परमिशन दी है, आई एम अटैचिंग दीज पॉलिसीज डायरेक्टली. अब जैसा कल मैं आपको बता रहा था, इज सपोज यू हैव numerous users to be managed, right? You have got hundreds, multiple hundreds of users, right? And you have different set of permissions to be assigned. So one of the ways that you go user by user, right? Take one user at a time, define the permissions, right? The way I'm doing it. Or else, is suppose you have the group in the sense that you have
a department, a division, right? IT group है, engineering team है, kind of thing, right? Wherein multiple users are there and all those needs to be assigned with same set of permissions. So create a group, right? तो चलिए अभी हम एक यूजर और create कर देते हैं, right? And like this you can have many users, लेकिन मैं 2 यूजर पे ही आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूँ. So let's have one more user. ये हो जाएगा हमारा user 2. I'm providing the console access as an I'm user and password I'm going to specify manually. Right. And I don't want to set the password at the time of login. Permissions, once again, I'm not assigning any permissions and create the user. All right. So, the details, you can download all these details into a CSV file or you can email these contents, these details. The email also shall be written with the user list and now I have got 2 users. All right. अब मान लीजिए ऐसे आपके पास hundreds of users are there, right? And if you have to assign the user same set of permissions, right? Second hold disturbance. चलिए लेट्स स्टार्ट. हाँ, तो ये 2 यूजर मैंने क्रिएट कर दिए और अब ऐसे मेरे पास बहुत से यूजर हो सकते हैं, राइट? अगर मुझे वो सेम सेट ऑफ परमिशन देना है, सो बेटर इज आई शुड बी क्रिएटिंग द ग्रुप. अब ग्रुप जो है आप इसी आधार पे क्रिएट करोगे कि उनका टीम कैसी है. मान लीजिए ऑल दीज यूजर्स आर फ्रॉम आईटी टीम, तो let's go for user group, right? And here I say create group. Group का नाम वैसे टीम, ठीक है. आप यूजर यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, बाद में भी ऐड कर सकते हो एंड यू कैन असाइन द परमिशन, राइट? अब हम जो परमिशन असाइन कर रहे हैं, पॉलिसीज एसोसिएट कर रहे हैं, वो ग्रुप को कर रहे हैं रादर अटैचिंग दैट टू द यूजर्स. और आप देखेंगे यहाँ पर कि मल्टीपल पॉलिसीज कैन बी एसोसिएटेड, मीनिंग मल्टीपल परमिशंस. On a group you can have multiple set of permissions, ठीक है? तो चलिए मुझे इस टीम को परमिशन देना है रिलेटेड टू डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? और क्या देना है? बीपीसी से रिलेटेड, बीपीसी, राइट? बीपीसी नहीं, ओके. Let's make a search for something different. Create group. और यहाँ पर अभी और परमिशन ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. तो ये ग्रुप है और इस वक्त इस ग्रुप को जो परमिशन दिए हैं वो है डाटाबेस एडमिन, अटैच मोर पॉलिसीज, राइट? चेक बीपीसी के साथ है क्या.
हाँ लिखते हैं, और मैंने बोला इसको दे देते हैं VPC read only access also. Yes. So now this group has got two permissions, right? All right. So group is one thing, and now simply I need to add the users into this group. आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, add users, right? और जो भी users आपको ऐड करना है, just select like this, add users. And the moment I have these users added up into this group, automatically the permissions of this group will be taken up by all the users in this group, right? Verify करते हैं, go back to the users, right? See the permissions, user one, आप देखेंगे user one को जो permission है, right? One of the permission is EC2 full access, right? Which is attached directly, and there are two other permissions which are by way of belonging to this group IT team. Just because this user belongs to this IT team, it has got two additional permissions, right? Similarly, if I see the permission for user 2, so इसको directly कोई permission नहीं है, right? All the permissions are by way of this group only, right? And user can belong to multiple groups also, right? तो एक group पर हम multiple permissions दे सकते हैं, और on the top of that you can have a user added up to multiple groups. और multiple groups की जो भी permissions हैं, they are going to have a cumulative impact, meaning permissions are going to be added up, right? Cumulative impact रहेगा. चलिए, तो एक काम करते हैं, एक ग्रुप और बना देते हैं, ग्रुप, और यहाँ पर ग्रुप का नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज माय engineering team, और इसको परमिशन दे देते हैं, सपोज RDS, Amazon RDS full access, right? Create a group. Okay, and now suppose I add the user, right? And हम user यहाँ से भी add कर सकते हैं, right? Add user, और मैंने केवल user 2 को ही add किया, right? Selected users. Okay, and now if I verify the permission, so user 1 तो as it is जो permission है, एक permission को directly है, वो बाकी दो permissions IT team की वजह से हैं, right? और जो हमारा user 2 है, will have the set of permission just because it belongs to two different groups, right? उसमें ये जो दो permission है, it is just because it is there in the IT team, and it has RDS full access just because it belongs to engineering group. Yes. So permissions are cumulative in nature. A user can belong to multiple groups, right? और जैसा मैंने शुरू में भी हम पढ़ रहे थे उसको, Amazon का जो रिकमेंड तरीका है वो है create the group. Rather assigning the permissions, associating the policies directly to the user, create the group. भले आप एक सिंगल यूजर बना रहे हैं, तब भी पहले आप एक ग्रुप बनाइए और उसमें सिंगल यूजर ही ऐड कर दो, right? This is recommended, right? कोई जरूरी नहीं है. So using a group gives you somewhat more flexibility. क्यों? Because in future, if suppose you are going to create, you are going to have the similar kind of users to be added up, you simply need them to add them into the group only. Automatically, permissions are going to be taken up by those users, right? तो ये था group. So group, creating a group, using a group is simply a management convenience, और कुछ भी नहीं है, right? अगर आपके पास ऐसे हजारों यूजर अगर आपको मैनेज करने हैं, right? So assigning the permission individually is going to be a very pathetic task, right? चलिए. Next is so permissions हो गए, groups हो गए, security credential. Security credential में एक credential तो हमने बात कर लिया है, और वो है आपका access key, right? आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर यूजर ने बोला आपको, हम यूजर 1 है अभी, हम जो भी बात कर रहे हैं यूजर 1 के लिए बात कर रहे हैं. यूजर 1 अगर बोलता है कि आई हैव लॉस्ट द की, तो एज ए रूट यूजर
आप उसको एक्सेस की तो बता सकते हैं, लेकिन सीक्रेट एक्सेस की जैसे मैंने बताया है, you cannot retrieve it. There is no way, right? अगर यूजर ने रिपोर्ट किया कि I have lost the key, so the only way is that you deactivate this key. Right now it is active, so make it inactive and recreate a new key pair, right? Go to the action, deactivate, right? Deactivate करने के बाद आप उसको delete भी कर सकते हो if you don't, क्योंकि deactivate का मतलब है आप उसको activate भी कर सकते हो. Deactivate का ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जैसे for a longer duration, if suppose you are on a break, you are on a leave and you cannot continue with your account, so deactivate the key, right? It's going to be a temporary halt. Again, when you resume your services, you can activate the key, right? That is the advantage. But if suppose you no longer want to keep this key, so you can delete it also. पहले deactivate करो फिर delete करो, right? और key अगर गुम हो गया है, so recreate a new access key, right? और ये सब root user ही करेगा. Alright. Next is सिक्योरिटी में है आपका कंसोल का मैनेजमेंट, राइट? कंसोल पासवर्ड. अगर यूजर बोलता है कि मेरा कंसोल पासवर्ड खो गया है, चेंज करना है, डीएक्टिवेट करना है, तो वो सारी की सारी बातें आप यहाँ से कर सकते हो. मैनेज कंसोल एक्सेस एनेबल, डिसेबल, राइट? पासवर्ड, कीप एक्जिस्टिंग पासवर्ड, ऑटो जनरेट कस्टम पासवर्ड, राइट? और यूजर मस्ट क्रिएट रिसेट द पासवर्ड विद द लॉगिन. ये सब आप खुद कर सकते हो, राइट? तो कंसोल मैनेजमेंट पासवर्ड जो है यहाँ से करोगे. इवन एक्सेस कीज का मैनेजमेंट भी यहाँ से करोगे. वन मोर थिंग इज देयर, दिस इज MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. दिस इज एन एक्स्ट्रा लेयर और एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी. और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, राइट? नॉर्मली क्या होता है कि whenever you are trying to access any application, getting access to an application, web-based application, so normal authentication क्या होता है उसमें? Username, right? Password, right? And if everything is correct, okay, login is successful. ये normal है, right? But इसमें risk भी है, right? Risk क्या है? That if because of any reason, right? या किसी भी कारण से अगर आपका पासवर्ड सामने वाले को पता चलता है तो वो भी लॉगिन कर जाएगा, राइट? सो नॉर्मली एडिशनल लेयर सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा है जो एप्लीकेशन क्रूशियल हैं, दे आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्चा, राइट? और मोस्ट ऑफ टाइम इट इज OTP, राइट? वन टाइम पासवर्ड काइंड ऑफ थिंग. So if suppose this feature is enabled, so apart from providing your regular credentials, username, password, you have to provide this OTP also. You are prompted for the OTP, and only when OTP is correct, combined to both of these authentication makes your login to be successful, right? तो भले यूजरनेम पासवर्ड आपका हैक हो जाए, क्रैक हो जाए, कोई जो है उसको चुरा ले, देख लिया, कुछ भी ऐसा है, even then that fellow cannot log in, right? Because this is very unlikely that OTP भी वो आपका हैक कर रहा है, very unlikely. So this is additional layer security. तो यहाँ पर OTP is part of MFA. यहाँ पर हम MFA यूजर के लिए एनेबल कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें चाहिए MFA एनेबल डिवाइस, राइट? हार्डवेयर MFA डिवाइस भी होते हैं और वर्चुअल MFA डिवाइस भी होते हैं मतलब हमें बनाना पड़ता है. हम अपने मोबाइल को वर्चुअल MFA डिवाइस बना सकते हैं, राइट? बाय इंस्टॉलिंग authentication apps, for example Google Authenticator, right? Like one app used by this Amazon is Google Authenticator, right? तो आप अपने प्ले स्टोर से इसको सर्च करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल में, राइट? एंड देन यू हैव टू रजिस्टर दिस मोबाइल विद दिस यूजर, राइट? ये मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, आप खुद भी कर लेना इसको, राइट? बहुत सिंपल है, बिना बताए भी आप इसको कर सकते हो, राइट? तो देखिए इसको अगर मुझे इनेबल करना है, सो देखिए क्या है, असाइन MFA डिवाइस. तो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस को MFA डिवाइस बनाना होगा, राइट? आपका जो मोबाइल है, डाउनलोड द एप्लीकेशन, इंस्टॉल इट, गूगल ऑथेंटिकेटर, राइट? ये राइट ऑथेंटिकेटर ऐप, राइट? सिक्योरिटी की ये अलग अलग ऑप्शंस हैं,
हम यूज कर रहे हैं MFA डिवाइस ऑथेंटिकेटर है, राइट। दिस डिवाइस का नाम दे देते हैं, दिस इज माय डेमो डिवाइस काइंड ऑफ थिंग। नाउ एंड नाउ सेटअप डिवाइस। अब ये देखिए क्या बोलता है, इंस्टॉल ए कंपैटिबल एप्लीकेशन सच एज गूगल ऑथेंटिकेटर, डियो मोबाइल, राइट। ये सब ऐप्स के नाम हैं, आप अपने उस पर इंस्टॉल कर लो। So most of the time we are using, almost every time, Google Authenticator is reliable, right? इंस्टॉल करने के बाद, right, you have to scan this code, open your Authenticator app, right? देखिए सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ मैं नहीं भी बताऊंगा तब भी आप कर लोगे। And you are going to scan this QR code, right? ये जब QR कोड आप स्कैन करोगे, उसके बाद आपको जो कोड एप्लीकेशन में जो कोड रनिंग चल रहा होगा, 6 डिजिट कोड होता है ये, वो आपको प्रोवाइड करना है, राइट। 2 बार एवरी 30 सेकंड वो कोड चेंज होता रहता है ऐप के अंदर, राइट। सो फर्स्ट कोड व्हेन इट अपीयर्स प्रोवाइडेड, आफ्टर 30 सेकंड्स नेक्स्ट कोड इज गोइंग टू अपीयर प्रोवाइडेड, एंड से ऐड ऐप। बस इतना करना है, हो जाएगा। कर लोगे? कर लोगे ना? सिंपल है, सब कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. और उसके बाद ये डिवाइस जो है ऐड हो जाएगा इस यूजर। तो मान लीजिए आप यूजर 1 है, खुद यूजर 1 है। अब जब आप लॉगिन करेंगे तो ये डिवाइस आपके पास होना चाहिए, राइट। नहीं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, राइट। बिकॉज ऑफ एनी रीजन ये सब एनेबल करने के बाद आपका डिवाइस खो गया, राइट, या वो आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ नेटवर्क है, बंद पड़ा है, राइट, यू कैन नॉट लॉग इन। कोई तरीका नहीं है लॉगिन करने का, क्योंकि इस पर जो 6 डिजिट कोड जो कॉन्स्टेंटली जनरेट हो रहा है, राइट, एवरी 30 सेकेंड that 6 digit code generates in this app, वो आपको प्रोवाइड करता है at the time of making login access. So this is extra layer of security, right? वो हम enable कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बातें हो गई, कंसोल का मैनेजमेंट, MFA एंड एक्सेस फीस, ठीक है। बस काफी है इसके लिए। देन और क्या रह गया है? बस हो गया सिक्योरिटी तो एक्सेस एडवाइजर नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज roles, right? Roles and policies. Roles and policies मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है। आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मैं कल आपको बताता हूँ। थोड़ा लेक्चर डिस्टर्ब हो गया है, नो प्रॉब्लम। कल जो है